हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो फर्स्ट वी शुड नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. फॉर एग्जांपल हमने पिक किया कि जैसे भाई कोई एटम X है विच इज़ हैविंग एटॉमिक नंबर 15. ओके, एटॉमिक नंबर मीन्स दिस इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर करेंगे 2, देन 8, देन 5. ओके, देन हमारे पास कोई और एलिमेंट है Y. okay, this one is having atomic number 11. ठीक है, तो इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर करेंगे 2, 8, 1. ओके, द नेक्स्ट वन हम लोग के पास एक और एलिमेंट है विच इज़ हैविंग द एटॉमिक नंबर 19. ओके, 19 को कन्फिगर करेंगे 2, 8, 8, 1. ओके, देन उसके बाद हमारे पास एक और एलिमेंट है विच इज़ हैविंग द एटॉमिक नंबर 17. ओके, ये X, Y, Z, A ये कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं. ओके, 17. सो इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर करेंगे 2, 8, 7. ठीक है, एंड देन वन मोर एलिमेंट वी आर हैविंग हुज एटॉमिक नंबर इज 18. ओके, सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बिकम 2, 8 and 8. ओके, अब students, what are the valence electron? Simply valence electrons are the electrons present in the outermost shell. इन सब में ये जो outermost shell है इनमें present जो भी electrons हैं they are known as valence shell electron. Okay, like इसमें this one is the outermost shell. So how many valence electron are there? 5. In this case 1. In this case 1. In this case 7. And in this case 8. सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर करते हैं किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को तो हमें दो चीज़ें पता चलती हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड सेकेंड थिंग नंबर ऑफ शेल्स. सो हाउ मेनी शेल्स आर देयर? 1, 2, 3. हाउ मेनी शेल्स आर देयर? 1, 2, 3. हाउ मेनी शेल्स आर देयर? 1, 2, 3 and 4. Again 3, again 3. Okay, and how many valence shell electrons? The electrons which are present in the outermost shell are known as valence shell electron. Like in this case 5, 1, 1, 7 and 8. ओके, सो अगर हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करें तो सेंटर पे न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ओके, एंड देन फर्स्ट शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2. एंड देन सेकेंड शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And the last shell is having 5 electrons. Okay, so how many valence shell electrons are there? 5 in this case. Okay, and these valence shell electrons are having maximum energy. Okay, only these electrons are having maximum energy, and that is why these electrons play an important role in a chemical change. Means during a chemical change these electrons either get transferred or shared. Okay, and during a chemical change only valence electron are transferred or shared, and that is why, and also the electrons in the shells other than valence shells they do not get transferred or shared, and hence they do not take part in a chemical reaction. So ultimately the chemical properties also depend on the valence electron. Okay, so the next topic is valence electron and chemical properties of elements. Okay, chemical properties of element totally depends on valence electron. If any two elements are having same number of valence electron, like in this example Y and Z, they both are having 1 valence electron, so they must have same chemical property. ठीक है, हम नंबर ऑफ शेल्स को ओवरलुक करेंगे. ठीक है, आई नो दैट इन केस ऑफ वाई द नंबर ऑफ शेल इज 3 एंड इन केस ऑफ जेड द नंबर ऑफ शेल्स इज 4. ओके, बट वी हैव टू ओनली काउंट द valence electron. So in case of Y and Z the valence electron are 1 and that is why they are having same chemical property. All right, so problem set इसमें solve कर लेना. Okay, now next is valence electron and metallic or non-metallic characteristic of element. Okay, so first one is metals. Metals वो elements होते हैं जिनके outermost shell में means valence electron 1, 2 और 3 होते हैं. ठीक है, they are the metals except hydrogen. Okay, except hydrogen, because as we know कि hydrogen में का atomic number होता है 1, that is why it contains only 1 electron. Though it is having 1 electron, its
outermost shell, but it is not a metal, it is non-metal. ठीक है, so except hydrogen, all the metals are having 1, 2 or 3 electrons in their valence shell. Here this Y and Z are the metals. Okay, the next one is non-metals. अब non-metals में इसके beyond 4, 5, 6 and 7, they are the non-metals. Okay, so the elements which are having 4, 5, 6 and 7 valence electron, okay, they are the part of non-metals except hydrogen. Hydrogen is having 1 electron and it is a non-metal, so including hydrogen, rest all the non-metals are having 4, 5, 6 and 7 valence electron. Okay, so here how many non-metals are there? 1 and 2, matlab X and Y, they are the non-metals. Then last one is 8. If an element contains 8 electron in its valence shell, then it is known as a noble gas. Then this one is a noble gas. ठीक है, so here this last one is a noble gas as it contains 8 electron in its outermost shell. Okay, so except helium, हम ये भी बोलेंगे कि एक्सेप्ट हीलियम जो होता है, ठीक है, एज वी नो कि हाइड्रोजन की जस्ट बात क्या आता है, हीलियम, एंड हीलियम इज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो इसकी एक ही शेल होगी और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 ओनली. ओके, सो including helium, all the noble gas are having 8 electrons in their valence shell. So again student, यहाँ पे भी helium का भी exception आ जाएगा कि helium containing only 2 electrons in its valence shell, though it is not a metal, it is a noble gas. All right.